Viewers, personal enmity between the groups of Angrej Singh and Tarsim Singh escalated into a major incident, culminating in a shootout late Sunday evening, leaving 4 dead and 8 injured. All right, viewers, getting that breaking updates coming in. This is coming in from Gurdaspur, where 4 people have died in violent clash. I want to go across to Gursimran, joining us live on the story. Gursimran, take us through what are we seeing on our screens. We see that 4 people have died and there has been a clash between 2 groups. What is the latest, Gursimran? See, this has been reported in the area that falls under the Hargobindpur Laitawala Chowk in the Batala area of the Gurdaspur, wherein the personal enmity that was there for years between the 2 groups of Tarsim Singh and Angrej Singh, that they came face to face and there was an exchange of fire. Roughly 60 rounds were fired by both the sides on each other, which led to 4 fatal casualties and 8 non-fatal casualties. Total of 12 people got injured, out of which 4 succumbed to the injuries. Rest are being treated at the district hospital in Batala. Apart from this, what we are getting to know that the police has registered an FIR with this regard, and the arrest will be made soon after the investigation that will be carried out. Since this was a personal enmity between the 2 groups, but how they got hold to the arms and ammunition, that remains to be a question on the law and order situation and the law enforcement agencies, because some live rounds have also been recovered. These are the 11 bore rounds that have been recovered from the spot by the police, and also some of the empty shells of these rounds that were fired by both the sides on each other, that too have been recovered. But this also raises a serious question on the prevailing law and order situation in the Punjab, that how time and again we have been witnessing that there is no rule of law and no fear of the police when it comes to these kind of incidents that are taking place, that are posing a serious challenge to prevailing law and order situation in Punjab, as 4 people have been killed and 8 others are injured in a personal enmity that turned violent yesterday evening at around 7:30. All right, Gursimran, we're getting some more reactions coming in. The BJP is saying that the law and order situation has really gone downhill there. Let's go ahead and play out the reactions coming in from the BJP. जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है तो कानून व्यवस्था वहाँ की ध्वस्त हो चुकी है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले संदीप थापर पर लुधियाना के मार्केट में तलवार से हमला, फिर अभी घटनाक्रम आई है जिसमें कि एक्स के साथ हमला किया गया वहाँ पे नशा माफिया के लोगों के द्वारा, और अब पानी को लेकर गुरदासपुर में 60 राउंड फायरिंग जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं। पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, गैंग वॉर्स हो, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या हो, मोहाली के हेडक्वार्टर पर आरपीजी अटैक हो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की साठगांठ है ये गैंग वॉर करने वाले लोगों के साथ, माफियाओं के साथ, नशे के माफिया के साथ, और इसीलिए इनको खुली छूट मिली है। और पुलिस का इस्तेमाल केवल अपने राजनीतिक जो विरोधी हैं उनके खिलाफ होता है। भगवंत मान जी जो कि नाम के मुख्यमंत्री है और केजरीवाल जी जो कि असलियत में मुख्यमंत्री है, तिहाड़ से सरकार चलाते हैं, दोनों को इस पर जवाबदेही देनी चाहिए। कल मौड़ मंडी थी तो आज बटाला है, जहां पे 4 लोगों का कत्लेआम हुआ। राइवल ग्रुप ने एक दूसरे पे गोलियां चलाई, तकरीबन सैकड़ों गोलियां चलाई गई और 4 लोग मारे गए। पंजाब आम आदमी पार्टी के रहते नो मैन लैंड बन चुका है। पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं रह गया, आतंक का कंट्रोल है वहां पे, गैंगस्टर्स का कंट्रोल है वहां पे, नशा तस्करों का कंट्रोल है वहां पे। और नशा तस्कर हो, गैंगस्टर्स हो या आतंकी हो, ये तय करते हैं कि आज पंजाब में क्या होगा। बेकसूर लोग रोज मारे जा रहे हैं, रोज नई नई वीडियो आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान सो रहे हैं, क्योंकि भगवंत मान के पास कोई पावर नहीं है, वो पावरलेस चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है, और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको पंजाब से कोई लेना देना नहीं, वो केवल और केवल पंजाब को लूटने का काम कर रहे हैं। वो चाहे सैंड माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया, वो पैसे बना रहे हैं और अरबों रुपया बना रहे हैं पंजाब को लूटकर। भगवंत मान जी जागो, जागो, इससे पहले कि पंजाब इतना तबाह हो जाए कि उसको ठीक करने में सैकड़ों साल लग जाएं, अपनी नींद से उठो और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लोगों को भगाओ और अपने हाथ में सत्ता लेके पंजाब को बचाओ। So, we're getting those reactions from the BJP. I want to go back to Gursimran. Gursimran, you know, we heard what the BJP has to say. They're saying that the law and order situation has really collapsed. They are saying that it's high time that the Aam Aadmi Party government pull up their socks. Has the Aam Aadmi Party government said anything?
See, as far as this incident is concerned, there has not been any reaction by the Aam Aadmi Party, and one thing that is seen clearly visible that the Aam Aadmi Party's entire leadership in Punjab, be it from the chief ministers to the cabinet ministers, they all are busy in the Jalandhar bypolls that are to take place on 10th of July, and there has been much criticism that the chief minister Bhagwant Mann has faced when he decided to move to Jalandhar for the bypolls. So their prime focus remains to be on the upcoming bypolls that is going to take place. But yes, this is a really serious concern. The law and order situation that is deteriorating in Punjab as these elements that are a threat to the society, they are getting a momentum with back-to-back such incidents that are taking place in different parts of Punjab. What we have seen in Ludhiana to what we are witnessing in the Gurdaspur's Batala. These are some of the concerns that the Aam Aadmi Party leadership needs to take very seriously as the law and order situation is crippling down with each passing day.